Okay. Hello, dear student. Welcome back once again at Unacademy Studio Vector. I am Mudit Raj and we are learning here engineering mechanics. Okay. So चैप्टर वाइज चैप्टर सीक्वेंस में हम लोग कई सारे लेक्चर कर चुके हैं ऑलरेडी एंड आज का अपना टॉपिक क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा जो टॉपिक है currently we are going through still the concept which are connected to center of gravity, center of mass, centroid and moment of inertia। ये सारा टॉपिक हमारा एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इनकी हमने बात पहले कर ली है लास्ट वीडियो में, COG, COM एंड सेंट्रॉइड्स की। आज हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कई बार जो स्टूडेंट हैं जिनका बेसिक वीक है वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ओके, so don't worry, we will discuss in detail and I hope you will get the feel of moment of inertia today. Okay, so let's start with my little introduction. Few viewer may be new, so I want to tell you them about myself little bit. For last 9 years I have been teaching for different competitive exams like CSE, ESE, GATE and PSUs. I have done my MTech in design engineering from IIT Delhi in 2010. My BTech is in mechanical engineering. In 2007 I have completed, so I am a mechanical engineering faculty. Right now I am a plus educator on Unacademy Plus platform. ओके, तो ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ऑनलाइन सारी क्लासेस चलती हैं जिसमें हमारी लाइव क्लासेस भी रहती हैं। तो जिन लोगों ने ये ऐप अनअकैडमी ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लें, और जिन लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं वो क्या इस लिंक के साथ मुझे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जब आप ये लिंक मेरा यूज़ करेंगे यू विल बी डायरेक्टेड एट दिस प्रोफाइल ऑफ मी। ओके, जब आप मेरे प्रोफाइल पे पहुंचेंगे तो जो भी मेरी स्पेशल क्लासेस हैं, ऑनगोइंग क्लासेस हैं, अपकमिंग क्लासेस हैं, पास्ट कोर्सेस है, वो सारा का सारा डिटेल आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। ओके, तो जैसे ये क्लास है अभी 1 अक्टूबर को हुई थी, अभी 3 अक्टूबर को भी मेरी क्लास है। सो लाइक दिस यू कैन अटेंड ऑल द क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड इट इज़ फ्रीडम फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ जब आप इस लिंक को फॉलो करेंगे आपको मेरे सारे अपकमिंग कोर्सेज के बारे में मालूम चलता रहेगा और आप उन्हें अकॉर्डिंगली अटेंड कर सकते हैं। इसी वीडियो में नीचे कई सारे लिंक हैं जिसमें हमारा एक टेलीग्राम लिंक भी है, उसको आप ज्वाइन करें। उस पर भी हम टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन आपको देते रहते हैं जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और आप सीक्वेंस में सारे कंसेप्ट्स को करते हुए चलें। ओके, सो सब्सक्राइब दिस ऑल्सो। Now many students are asking me about the Plus platform. Okay, so I want to tell you about the Plus platform and Plus subscription on the Unacademy. So Plus subscription क्यों जरूरी है? पहली बात तो ये देखो, सबसे पहली बात कि रियल टाइम इंटरेक्शन रहता है, लाइव क्लासेस रहती हैं, वहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, लाइव आप हम और आप उसमें कनेक्टेड रहते हैं, फैकल्टी एंड दी स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको उसमें करना क्या रहता है, 1 टाइम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। 1 टाइम सब्सक्रिप्शन आपको अनलिमिटेड एक्सेस दे देता है। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस कैसे? जैसे मान लो आपने 1 मंथ के लिए सब्सक्राइब किया या 6 मंथ के लिए सब्सक्राइब किया, जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने सब्सक्राइब किया उस ड्यूरेशन में प्लेटफॉर्म पर जितने भी फैकल्टी हैं, जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, मेरे कोर्सेज के साथ साथ आप दूसरे फैकल्टी के कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट आप उस ड्यूरेशन में जो भी चल रहा होगा सारे के सारे लाइव आप पढ़ सकते हो। सो जस्ट बाई 1 टाइम सब्सक्रिप्शन यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस फॉर दी ऑल दी कोर्सेज। ओके, जो भी आप वहाँ गोल सेलेक्ट करेंगे, जैसे ESE का गोल सेलेक्ट किया है उसमें जितने भी कोर्सेज चल रहे होंगे सारे के सारे आप अटेंड कर सकते हो। ओके, टाइम टू टाइम faculties discuss their tips and tricks, test series we offer, dedicated doubt clearing sessions are there, and the most important thing, downloadable sessions are there, videos on the and PDF। तो अगर किसी दिन बाई चांस किसी रीज़न से आपका कोई क्लास मिस हो जाता है, लाइव आप नहीं कर पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सारी चीज़ें बाद में एक्सेस कर सकते हो। क्लासेस का वीडियो, PDF, नोट्स, डाउट क्लियरिंग सारा वहाँ पे रहता है, वो सारा आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उस क्लास में क्या हुआ था।
तो आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। ओके, और आप अपने टाइमिंग भी, अपनी शेड्यूलिंग भी, अपनी प्लानिंग भी सब्जेक्ट्स की सारा इस हिसाब से आप कर सकते हो। इट इज़ मच मोर फ्रीडम फॉर द स्टूडेंट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू चार्जेस आर वेरी नॉमिनल, वेरी लोएस्ट चार्ज। ओके, so whenever you want to follow me, don't forget to use my code MR for Mudit Raj. You will get 10% discount also by this code. ओके, सो फी वैसे ही कम है, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है। और ये सारी की सारी क्लासेस लाइव हैं और कई सारे मेरे सेशन चल रहे हैं, स्पेशल क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। आप मेरे प्रोफाइल पे जाएं, विजिट करें, वो लाइव क्लासेस अटेंड करें। ऑल दीज स्पेशल क्लासेस आर फ्री फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप उनको एक्सपीरियंस करें और देखें कि आपको क्या वहाँ पर सारे का सारा आपको रियल फील मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप जब ये स्पेशल क्लासेस करेंगे तब आपको प्लेटफॉर्म के बारे में और अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। आप उसमें यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं, ये सारा आपको मिलेगा। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड यू विल फील लाइक रियल क्लासेस, ओके, इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ फी। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म। आई थिंक you all are getting all this information by all the videos. Now when you will subscribe, so many top faculties are teaching there, so in their respective subjects you will have unlimited access for all their courses also along with my courses. Okay, so जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे आपको सारा टाइमिंग डिटेल टॉपिक वाइज कब कौन सा क्लास स्टार्ट होगा। तो अभी जैसे हम मैकेनिकल की बात कर रहे हैं तो मैकेनिकल के सारे कोर्सेज कौन कौन से रन कर रहे हैं, कौन कौन से फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, किस किस टाइम पे क्लासेस चल रही हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस का टाइम क्या है, ये सारा चीज़ आपको मालूम चलते रहेगा ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी ESE सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूँ, मैनी स्टूडेंट आर आस्किंग अबाउट द ESE सब्सक्रिप्शन फी, ड्यूरेशन एंड ऑल दैट। तो देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखो फिर से फ्रीडम है आपके पास। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक, और 24 मंथ मैं कहता हूँ हमेशा दिस इज़ द वेरी गुड डील फॉर द थर्ड ईयर स्टूडेंट। थर्ड ईयर स्टूडेंट जो हैं वो अगर थर्ड ईयर से ही ज्वाइन कर लेते हैं तो 1 साल में तो आप अपना सिलेबस बड़े कंफर्टेबली कंप्लीट कर सकते हैं। वो सिलेबस आपको आपके एकेडमिक्स में भी हेल्प करता है, वहाँ भी यूनिवर्सिटी में आपका परसेंटेज इंप्रूव होता ही होता है, बिकॉज यू आर लर्निंग विद द टॉप एजुकेटर ऑफ द इंडिया एंड दिस इज द इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन लर्निंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC ESE वी आर डीलिंग विद। ओके, सो थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए 24 मंथ सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, फी इज़ वेरी लेस। ओके, जितना आपका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा आपका पर मंथ फी उतना ही कम है। जैसे आप 1 मंथ के लिए करते हैं तो 4000 पर मंथ है सिर्फ। अगर आप 24 मंथ के लिए करते हैं तो इट इज़ 1333 पर मंथ ओनली। इवन देन व्हेन यू विल यूज़ माई कोड, तो जैसे आपका 2 साल के लिए फीस ये है 32,000, व्हेन यू विल यूज़ माई कोड यू विल गेट द डिस्काउंट फॉर श्योर एंड योर फी विल बी लाइक दिस। ओके, अब कोई 1 ईयर सब्सक्रिप्शन चाह रहा है स्टूडेंट, अगेन यू कैन यूज माई कोड, यू विल गेट अगेन डिस्काउंट लाइक दिस। गॉट द पॉइंट और नॉट? सो आपके पास फ्रीडम है, ठीक है, जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए आप करते हैं उस ड्यूरेशन में सारे के सारे कोर्सेज, सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे नोट्स, आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट और नॉट? सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्सक्रिप्शन। अब सेम चीज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली ऐप को डाउनलोड करो, जो भी आपका गोल है, जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करो। जैसे ESE की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ESE सेलेक्ट करो, फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको सारा वहाँ पे वेरी इजी टू यूज़ है मिलती जाएगी। ठीक है, यहाँ भी जब आप यूज़ करेंगे माई कोड देन यू विल गेट अगेन फर्दर डिस्काउंट ऑन द फी। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म एंड द सब्सक्रिप्शन। ओके, तो जितने स्टूडेंट ने ये ज्वाइन कर लिया है दे आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट एंड दे आर फीलिंग हैप्पी, लाइक दे आर हैविंग रियल क्लासेस, बिकॉज वहाँ लाइव इंटरेक्शन है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, आप इसे कर सकते हैं। अभी बात आती है आज के क्लास और टॉपिक की। तो देखो आज का टॉपिक है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो इन सीक्वेंस वी आर कवरिंग ऑल द लेक्चर्स। इससे जस्ट पहले हम लोग COG, COM एंड सेंट्रॉइड की क्लास कर चुके हैं। इसी से कनेक्टेड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूँ देर आर 2 वर्ड्स, मोमेंट एंड इनर्शिया। मोमेंट इज डिफरेंट थिंग, इनर्शिया इज डिफरेंट थिंग। मोमेंट हम पहले भी बात कर चुके हैं। मोमेंट
जब हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था, तो मूवमेंट मैंने आपको बताया था, मूवमेंट इज ए ब्रॉडर पिक्चर, और मूवमेंट किसी के लिए भी डिफाइन किया जा सकता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या रहता है उसमें, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या दे रहा था, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस आपको दे रहा था, ठीक है। इनर्शिया एक डिफरेंट फील है, डिफरेंट थिंग है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। इनर्शिया क्या है, ये किस चीज की फील देता है आपको, रेजिस्टेंस की फील देता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, टुवर्ड्स एनी चेंज, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एनी चेंज। जैसे मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशन में लाना है, तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसीलिए हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। बिना फोर्स लगाए बॉडी क्यों नहीं चल देती, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में है तो उसमें अपने मास की वजह से एक इनर्शिया होगा, और वो इनर्शिया उसे चलने में अपोज करता है, इसलिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। गॉट द पॉइंट और नॉट? तो इनर्शिया अभी के लिए जान लो मोटा मोटा, इनर्शिया इज समथिंग विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस टुवर्ड द चेंज इन स्टेट। कुछ भी चेंज करोगे, ठीक है, रुका है तो चला रहे हो तो इनर्शिया लगेगा, चल रहा है तो रुका रहे हो तो भी इनर्शिया लगेगा, ठीक है। यहाँ तक कि एजुकेशन में भी अपना इनर्शिया है। जैसे कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता, उसको अगर पढ़ाना है तो इट इज़ वेरी हार्ड, वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और कोई स्टूडेंट बहुत पढ़ाकू है, पढ़ने वाला है, स्टूडियस है, उसको अगर हम कहें कि भाई तू ना पढ़, उसको रुकाना है, तो इट इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से पढ़ेगा। गॉट द पॉइंट? तो ये एक टेंडेंसी है कि अगर आपको कहीं भी चेंज लाना है, कुछ कहीं भी कोई चेंज लाना है, तो उस चेंज को लाने में हमें रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। इजीली सारे काम नहीं हो सकता। सो दैट इज नथिंग बट इनर्शिया। अब मूवमेंट एक अलग चीज है, इनर्शिया एक अलग चीज है, लेकिन साथ में जब दोनों आते हैं तो एक नई चीज बन जाती है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप बोलिए सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक लाइफ में मैंने 2 टाइप का पढ़ा है। कौन कौन सा? बोले सर 2 टाइप का पढ़ा है। एक पढ़ा है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब मैं 11th क्लास में था। उसके बाद जब बीटेक फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो दूसरा पढ़ लिया मैंने, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको कौन सा इनर्शिया जानना है? तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि सर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलूं या क्या कहूं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया MMOI, या कहूं MOM मोमेंट ऑफ मास, या कहूं सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। इसी को सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देते थे। कब? जब हम फिजिक्स पढ़ रहे थे 11th क्लास में, व्हेन वी वर स्टडिंग द फिजिक्स इन 11th क्लास, ओके, तब इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दे रहे थे, क्योंकि यही सिलेबस में था बस। उसके बाद जब थोड़ा सा ग्रो अप हुए और बीटेक फर्स्ट ईयर पहुंचे तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिया गया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो क्या होगा, AMOI, या कहें MMOA मोमेंट ऑफ एरिया, या कहें सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। यहाँ इसी को सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर ज़्यादा यूज है, वाइडली यूज्ड है। सो यहाँ ये हम जब बीटेक में पहुँचते हैं, बीटेक में एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ज़्यादा यूज है, तो जब सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलूँगा तो वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मतलब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कहो कि सर ये 2 टाइप का होता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। तो एक एक करके इनको देखते हैं। तो पहला मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी को क्या बोलेंगे, मूवमेंट, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मूवमेंट ऑफ मास। अब 2 बार मूवमेंट लेना है मास का। अब मैंने आपको कहा था कि मूवमेंट तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लिया जा सकता है, यहाँ मास की बात कर रहे हैं तो मास का मूवमेंट कैसे लेंगे। तो अगर कोई आपसे कहता है मूवमेंट बताओ, आप कहेंगे सर किसका मूवमेंट बताएं। तो मान लो वह कहता है कि बेटा ये छोटा सा मास है DM, इसका मूवमेंट बताइए, है। फिर आप कहेंगे मूवमेंट सर किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट लिया जाता है, अबाउट विच पॉइंट और एक्सिस, then you will say about this axis, then you will say okay what is the perpendicular distance। तो अगर ये perpendicular distance आपको दे दी जाती है, let's say x, then moment of mass क्या होगा इधर, moment of mass into perpendicular distance, ये सुनो, or you can call this first moment of mass। If they ask you again take moment of it, then it will be second moment of mass, second moment of mass।
So again multiply by the x. So it will be dm into x square. Third time you can also take the moment, fourth time. But they will become new physical significance. What is the physical significance of second? That is important for us. Second moment of mass is actually becomes mass moment of inertia. Mass moment of inertia. Okay. So it is for a small mass. So I can write here dim, mass moment of inertia, small mass moment of inertia. So it will be dm x square. If I want total, so total Im will be what? Integral of dim. So it will be the what? Integral of x square dm. Got the point or not? So this will be the total mass moment of inertia. अभी ये बहुत छोटा पार्टिकल टाइप था डीएम, वेरी स्मॉल मास, तो उसका डिस्टेंस तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ले लिया था. बट इफ दिस इज नॉट स्मॉल, दिस इज ए बॉडी लाइक दिस of total mass m, then if someone asks what will be the mass moment of inertia about this axis for this body, then perpendicular distance from this axis you will take up to which point? This point, this point, this point, this point. Up to which point? Because now distances will be different. So here actually distance will be taken up to what? Center of mass. That's why center of mass is assumed. So total distance up to center of mass we will calculate or measured. So it will be m into x. So here total mass moment of inertia of total mass will be mass into x bar square. X bar square. What the point or not? So this is nothing but mass moment of inertia. Mass moment of inertia of this body. Now, what is the physical significance of this? What is the physical significance of this? तो देखो इसको समझो. फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा? रेजिस्टेंस टुवर्ड्स रोटेशनल मोशन. Rotational motion. How? So this is physical significance of mass moment of inertia, which is nothing but resistance towards rotational motion. How? Let's say if I take a small flywheel of mass only 2 kg and it is hinged here, let's say, and initially it is in rest. If I simply ask you, go and rotate this flywheel by your hand, so maybe you will go and rotate it. Second, if I say, if it is already rotating, go and stop by your hand, maybe you will try and stop it. But second, if I say there is one more flywheel hinged at the center like this and mass is how much? 2 ton. Okay. 2 ton. It is in rest. If I ask you go and rotate by your hand, will you try? Will you try? So even when you will try, it will be very hard to move it. Okay. And if it is already rotating, let's say with 2000 rpm, and I ask you go and stop by your hand, will you try? So few will get fear. No sir, I will break my hand. So when mass is high, so about this axis, mass moment of inertia will be high. So resistance will be very high. Means if in rest, it is very hard to move. If already moving, means very hard to stop. Got the feel or not? So this is actually resistance towards rotational motion. If mass is less, mass moment of inertia will be less resistance it will offer. If it is in rest, simply you can make it in motion. If it is in motion, simply you can put it in rest. Got the point or not? So mass moment of inertia is what? It gives actually resistance towards rotational motion. Okay, resistance towards rotational motion. ठीक है. So ये हुआ हमारा पूरा का पूरा
मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी बात करते हैं आगे। सेकंड, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन सिमिलर फैशन जैसे हमने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया है, उसी तरह एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी डिफाइन कर लेते हैं भाई। अगर कोई कहता है मोमेंट बताओ, आप कहेंगे किसका मोमेंट सर, तो वो कहता है इस स्मॉल एरिया डीए का मोमेंट बताइए। देन यू विल आस्क अबाउट विच एक्सिस सर, ही विल से अबाउट दिस एक्सिस बेटा, विल से ओके। What is the perpendicular distance? Let's say x. So what will be the moment of area? So it will be simply area into perpendicular distance. What will be the second moment of area? It will be again multiply, so it will be x square. This will become nothing but area moment of inertia, which is nothing but moment of area or second moment of area. So this will become dA into x square. Like this. So this will be actually what? Small dia for a small area like this. If I want total, so total ia will be what? Integral of x square dA. Integral of x square dA. Now again second case, if it is not small element, it is a body, perfect body having area A like this. Okay, now distance will be taken up to which point? Yeah, now you have clue. Distance will be up to what? Centroid of area. That's why we define the centroid. So let's say up to centroid distance is x bar. So directly I can write area moment of inertia will be total area into perpendicular distance square. So this will be the area moment of inertia for this area, total body. Yes or no? Now again, what is the physical significance here for area moment of inertia? So for area moment of inertia, physical significance is what? Resistance towards bending. Resistance towards bending. तो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बेंडिंग ये भी आपको बचपन से फील होता है, जस्ट लाइक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर दिस यू हैव फीलिंग ना कि इसको रोटेट कराना इजी है या इसको रोटेट कराना इजी है। यू हैव फीलिंग बिकॉज यू आर प्लेइंग with these things from the childhood like toys. So when you were playing with the toys, actually you were learning the moment of inertia. Okay, you are getting the information, new information about the things. Okay, so here for rotational motion or rotating toys, we are actually learning and getting the feel of moment of inertia. Similarly, you all also have the feeling from childhood for resistance towards bending, means area moment of inertia. Okay, that I can also explain here. How? Look, this is the figure. So this is the figure. This you could find on the social media also. I have created it and now it is being viral. Look, in childhood, let's say you were given with a Parle-G biscuit like this. So when Parle-G biscuit first time was given to you, you observed, let's say length is L, this width is B, and the dimension this side is D. Okay, अभी थोड़ा बड़े हो गए हैं तो हमको पता है, मान लो ये जो एरिया A है, इसके लिए ये एरिया A जो है कितना होगा, B इंटू डी। अभी इसके लिए लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, अभी बड़े हो गए हैं, बीटेक कर लिया तो अपने को पता है आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, विच एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर, आई एक्स एक्स विल बी मोर हेयर। ओके, बिकॉज आई एक्स एक्स इज वॉट हेयर, वी नो द फॉर्मूला बी डी क्यूब बाई 12 एंड दिस विल बी हाउ मच, डी बी क्यूब बाई 12, because B is less than the D and D is more, so this will be more and this will be less. हमको पता है इधर IXX is more, IYY is less. So actually with this biscuit or Parle-G, we can learn the concept of area moment of inertia. How? If I ask you, let's say this is your
Parle G biscuit. Let's say this length is L, this width is B, and this height is D. Here it is x-axis and here it is y-axis. Here it is x-axis and here it is y-axis. So actually, when a biscuit is given to you, how you break the biscuit? How you break the biscuit? About x-axis like this or about y-axis like this? How you break the biscuit? About x or y? So many will say about y. We break the biscuit like this generally. Why? Because about y-axis, IYY is very less. IYY is less. So less resistance toward the y-axis and more resistance biscuit will offer about x-axis. Okay. So here, with the help of this Parle G biscuit, you can have feel of area moment of inertia. So area moment of inertia about x-axis is high, so we cannot break about x-axis. Area moment of inertia about y-axis is less, so we can bend it about y-axis. Got the point or not? So this is how we can learn and have the feel of area moment of inertia also. अभी जब थोड़े बड़े हुए हैं, so now this Parle G has become what? Beam in our syllabus. So this will be beam actually. Okay. So in the beam, when beam are placed to support the load, okay. So in the beam, this depth is kept more, this width is less, because generally weight is perpendicularly downward, so there are chances of bending about x-axis. That's why we keep IXX more than the IYY, because chances of bending about x is more for this type of beam. So IXX we keep more. And right now, if I little talk about the economics of our country, so this post you can relate, you can read from the post. So Parle G is teaching us mechanics as well as economics both. Okay, so this was the concept of moment of inertia, means mass moment of inertia and area moment of inertia. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉमन एरिया. तो कॉमन एरिया में हम पहला लेते हैं रेक्टेंगुलर एरिया. सो लेट्स से दिस इज ए रेक्टेंगुलर एरिया, टोटल एरिया ए इक्वल टू बी इंटू डी. सो दिस इज बी लेट्स से, and this is D, let's say this is center. So let's say first I want to find about x-axis, Ix. Okay, so what I will do, I will consider an elementary area dA parallel to the x-axis at a distance y of thickness dy. So dA will be what? B into thickness dy. So B into dy this will be. So about x-axis, what will be the dIx will be small area into distance square. Small area is b into dy, so into y square. So dIx, small area moment of inertia, will be equal to b by square dy. Okay, this much. So now if I want total Ix, so total Ix will be integral of this. So integral of this will be what? b by square into dy. So with respect to y, we are integrating here. So I can show you the limit for the integration. So along the y-axis, it is going up to what? Minus dy2 to plus dy2. So minus dy2 to plus dy2, we will make the limit. So minus dy2 to plus dy2 will be the limit. So when you will solve it, you will get what? Ix equal to bd cube by 12. Okay. Similarly, when we will solve our y-axis, we will get what? db cube by 12. db cube by 12. So these are the area moment of inertia. And as we know, this is centroid of area. So bar, these are centroidal axis. So don't forget to use bar over this. So these are actually centroidal axis. So everywhere there will be bar. Okay. So this is area moment of inertia of rectangular area. तो जिस प्रोसेस से यहाँ सॉल्व किया है एलिमेंट कंसीडर करके,
वैसे ही दूसरे आप फिगर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम सेव करेंगे, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे फॉर द ट्राइंगुलर एरिया। तो ये अगेन सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइडल एक्स एंड वाई एक्सिस बन जाएगी। लेट्स से दिस इज बी एंड दिस हाइट इज एच, सो हियर आई एक्स एक्स बार विल बी व्हाट, बी एच क्यूब बाई 36, bh cube by 36, and I by bar will be also similarly hb cube by 36. Both are same like this. For this is the center, so again these will be the centroidal x and centroidal y axis. Here about x axis it will remain same, bh cube by 36. Let's say again base is b and this height is h, okay. But about y axis it will get changed and it will become hb cube by 48, hb cube by 48. So about x axis centroidal and about y axis centroidal, about centroidal x axis and y axis. So directly for these figure we have to remember, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये डायरेक्टली लगाने होंगे, अप्लाई करने होंगे, तो सारे फिगर्स के हमें सेंट्रॉइड पर ये याद करना होगा. वी हैव टू मेमोराइज ऑल दिस थिंग. सो फॉर द रेक्टेंगल एट द सेंट्रॉइड these are the value. If we are in need about any other axis, that we can find by parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. Parallel axis theorem and perpendicular axis theorem वो हम लोग बाद में करेंगे इसके बाद. So these are the value. If I talk about circular area, so let's say this is circular area, this is centroid C and diameter is D, let's say. So here about x and y axis both are centroidal, symmetry is there, so due to symmetry both will be same. X bar y bar equal to pi by 64 d power 4. Okay, so both axes we know. Next, parallel axis theorem. Parallel axis theorem we use to find the moment of inertia about any axis which is parallel to centroidal axis, which is parallel to centroidal axis. तो देखो, the moment of inertia is known about any centroidal axis, then about any other parallel axis it will be given as. तो मान लेते हैं कि ऐसे कोई एरिया A है भाई, ठीक है, यहाँ इसका सेंट्रॉइड है, तो ये इसकी सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस हो गई. तो इस सेंट्रोइडल एक्सिस पर इसका कुछ सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. तो अगर मैं किसी दूसरी एक्सिस ए पर पता करूं, दूसरी एक्सिस ए पर जो कि यहाँ से लेट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 की दूरी पर है, तो वो कैसे मिलेगा, आई ए इक्वल टू आई एक्स बार प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. सो इट विल इंक्रीज because positive. So when we go away from centroid, moment of inertia increases. When we go towards the centroid, moment of inertia decreases. ठीक है. If I further want to go at b axis and let's say it is at d2 distance from a axis, so can we apply ib equal to ia plus area into d2 square? क्या ये अप्लाई किया जा सकता है इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच में? Yes or no? No. This we can never apply because both are non-centroidal axis. At least one axis must be centroidal. So we have to come here to here. So total distance will be what? D1 plus D2. So actually we will apply what? This is wrong. So इसको लिखो और कट करो so that you will remember. So here IB if I want to find, again I will move from center, Ix bar plus area into total distance square. So total distance will be this much. So this is correct, this is wrong. So write it down and cut it so that you will remember. So this is all about parallel axis theorem. Okay. Now पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में दो पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच में अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एटलीस्ट वन एक्सिस मस्ट बी सेंट्रोइडल एक्सिस. तो दोनों पॉइंट लिखो. पहला, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एटलीस्ट वन एक्सिस इज सेंट्रोइडल. ए और बी एक्सिस में नहीं लगेगा. ए एक्स और ए, एक्स और बी, तभी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है.
दूसरा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस इज द लीस्ट और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट जीरो। ठीक है, तो हम यहां फिर देखें कि एक्स बार एक्सिस पर कोई वैल्यू होगी तो ए पर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया प्लस, बी पर क्या हुआ और इंक्रीज हो गया प्लस। तो जब सेंटर से दूर जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर रहा है, जब सेंटर की तरफ आएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा। तो सेंटर पे कितना बचेगा, तो कई बार स्टूडेंट जल्दी से बोल देते हैं जीरो, बट इट इज नॉट जीरो, इट इज मिनिमम मिनिमम मिनिमम। तो ये याद रखना है, इट इज द मिनिमम और लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट जीरो। ठीक, अगली और बातें याद रखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में हम जानते हैं कि जैसे ये कोई बॉडी है और इसकी कोई दो एक्सिस एक्स और वाई जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं सेंट्रोइडल, उन पर हमको मान लो वैल्यूज पता है, इसका आई एक्स एक्स मालूम है और इसका आई वाई वाई मालूम है, सेंट्रोइडल सेंट्रोइडल। देन दी any third mutually perpendicular axis IZ. So about this we can find how add IXX plus IYY. So when we will add both the x and y axis, we will get the value of moment of inertia about z axis. So this is all about the perpendicular axis theorem. ठीक है, अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो सारे केस में लग जाता है, बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज नॉट वैलिड इन ऑल केसेस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखो किस केस में वैलिड रहता है और किस केस में वैलिड नहीं रहता है। इट इज वैलिड फॉर ऑल केसेस ऑफ AMOI। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में तो सब में लग जाता है। ये दोनों थ्योरम हम लोग एरिया और मास दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज करते हैं ना, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो ये सब में लगता है, बट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में इट इज नॉट वैलिड फॉर नॉन प्लेनर बॉडीज। ठीक है, लाइक स्फीयर, सिलेंडर, कोन, इनके केस में ये नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे स्फीयर है, स्फीयर के केस में अबाउट ऑल थ्री एक्सिस देयर इज सिमेट्री। स्फीयर के केस में अबाउट ऑल थ्री एक्सिस देयर इज सिमेट्री, यस और नो। सो ड्यू टू सिमेट्री, इफ इट इज हैविंग मास m, all three Ix bar, Iy bar and Iz bar must be equal। और स्फीयर के लिए कितना रहता है याद है क्या, 2/5 mr स्क्वायर इफ r is the radius of sphere। तो तीनों इक्वल होना चाहिए। Here we cannot apply the perpendicular axis theorem। क्या, Iz bar equal to Ix bar plus Iy bar, can we write like this? No, we cannot write like this। So it is not valid in case of नॉन प्लेनर बॉडीज। बात आई समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, पहली बात तो ये देखो, ये कब डिफाइन किया जाता है, ये डिफाइन किया जाता है कॉम्प्लेक्स एरिया या कॉम्प्लेक्स मास सिस्टम के केस में। ठीक, क्या होता है वो देखो, इट इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस, इट इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस फ्रॉम एनी एक्सिस एट विच The object must be placed in concentrated form। ऑब्जेक्ट को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बदल दो, किसमें, या तो स्ट्रिप एरिया में इन केस ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या तो पॉइंट मास में इन केस ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिमेन सेम एज दैट ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, तो ये पूरा इसका थ्योरम आपका स्टेटमेंट है। अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो लुक, पहले मैं बात करता हूं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में। सो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में लेट्स से दिस इज ए एरिया ए, हाँ, और ये इसका सेंट्रॉइड है। सो लेट्स से अबाउट दिस इट विल हैव सम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू आई एक्स बार। ओके, अबाउट एक्स बार एक्सिस इट विल हैव सम वैल्यू like this। Now if I put this area away from this axis in concentrated form like this, strip area में change कर लो, like if this area is let's say 100 mm square, तो इधर भी एरिया का वैल्यू वही रहना चाहिए, सेम वैल्यू इट इज, जस्ट इट इज गॉट कन्वर्टेड इनटू कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, मीन्स स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दिया, थिन स्ट्रिप।
थिन स्ट्रिप फॉर्म। ओके, तो इसको अभी कहाँ रख दें, एट व्हाट डिस्टेंस के, so that about this x axis, x bar axis, its value will remain same. So about this x axis, its value must remain same. How much will be value here? A into k square, area into distance square, so it will be a k square simply. Now here if this value is some, let's say 500 mm power 4, so you can put this value here and you can find the value of k actually. So k will be what? Under root ix bar by a. So this will be the radius of gyration of this area. So when this area will be put in concentrated form, thin strip form, at what equivalent distance, so that area moment of inertia value will remain same. Second, in case of mass moment of inertia, in case of mass moment of inertia, this is a body of mass m. Let's say this is center of mass and this is centroidal x-axis. So about this will have some ix bar value mass. Here ix bar is what? Area moment of inertia. So I can put suffix a. Here it is mass moment of inertia, so I will put suffix m. So again, where to put after concentrating, so after converting this whole mass into a point mass, value of mass must remain same. Let's say 10 kg, so this will be also 10 kg. At what distance k it must be placed, so that about this axis its ix bar mass moment of inertia will remain same. So moment of inertia will be here what? M into k square. So k will be simply equal to under root ix bar m over m. Okay, so this is radius of gyration. So these are defined for complex area and complex mass system. कॉम्प्लेक्स मास सिस्टम जैसे मैं बात करूं, आपका फ्लाई व्हील ना तो परफेक्ट रिंग है ना परफेक्ट डिस्क है, उसमें कई सारा हब और आर्म्स और बहुत कुछ रहता है, तो वो कॉम्प्लेक्स मास सिस्टम बनता है। तो कॉम्प्लेक्स मास सिस्टम के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन किया जाता है फॉर सिंपल कैलकुलेशन, और कॉम्प्लेक्स एरिया या कंपोजिट एरिया के केस में भी रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन किया जाता है टू सिंप्लीफाई द इक्वेशंस. Got the point or not? So I hope you enjoyed this lecture of moment of inertia and you got some better insight of moment of inertia, and also you got the physical significance of both moment of inertia, area moment of inertia as well as mass moment of inertia. Okay, so don't forget to hit the bell icon, and those who are following me continuously, don't forget to use my code MR to get 10% discount. It is your benefit. And here don't forget to subscribe, like and comment like this. So keep motivating, keep watching it. This all gives us energy and motivation. Okay, so wish you all the best. Bye. See you in next video.